Hello everyone, welcome to our Nagin Best Digital Learning channel. Today I am here with first chapter of class 8th Computer Science, Networks and Communications. So let us first of all look at the outcomes. After completing this unit, students will be able to define computer networks, know components of computer, define a client and server architecture, explain different types of networks like LAN, MAN, and WAN, explain communication devices like dial-up modem and NIC or network interface card, explain physical transmission media, twisted pair cable, coaxial cable, and fiber optic cable. Explain cellular communication, satellite communication, global positioning system, and Bluetooth. So, let us begin with a chapter. Unit Introduction. The advancement in computer technology has revolutionized amongst aspects in our life. In earlier days, data was not shared amongst different computer or devices. Now, data and information is being shared amongst computer. The sharing of data among computers is referred to as data communication. This has increased the use of computer beyond the computer room. Data communication has enabled us to send and receive data and information from one computer to another computer. Means the advancement of computer technology has revolutionized amongst very aspect. मीन्स कंप्यूटर की एडवांसमेंट के वजह से बहुत सारी जगह पे कंप्यूटर का यूज़ बढ़ गया है। क्यों? पहले के टाइम पे कंप्यूटर से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ना तो भेज सकते थे ना ही रिसीव कर सकते थे, पर अब डाटा और इन्फॉर्मेशन इजीली शेयर हो सकती है कंप्यूटर्स के बीच में, और शेयरिंग ऑफ डाटा इज़ रेफर टू एज डाटा कम्युनिकेशन. The sharing of information from one computer to other computer is possible if these computers are connected or linked with each other as a network. Means sharing तभी possible है जब एक रिसीवर और सेंडर दोनों कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्टेड हो. In this unit is dedicated to computer networks and data communication. So let's begin with computer networks. Most computer systems are now connected together in some ways to form what is known as networks. Means what is network? The group of computers connected together are called network. This range of basic in school or home network of only a few computer to a large network such as internet. Means नेटवर्क हमारे स्कूल में भी होता है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, या हमारे घर में वाईफाई से डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, या फिर इंटरनेट. व्हाट इज नेटवर्क? अ कंप्यूटर इज इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड इन अ सेम रूम, बिल्डिंग और एट डिफरेंट प्लेसेस. मीन्स अ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो सेम लोकेशन पे कनेक्टेड है, चाहे वो सेम रूम में हो सकते हैं, एक बिल्डिंग में हो सकते हैं, या फिर अलग अलग जगह पे हो सकते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क enables the sharing of information, programs and hardware components. Figure 1.1 shows a computer network. Means कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम डाटा को, इंफॉर्मेशन को या प्रोग्राम को, इवन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं. मींस एक कंप्यूटर एक प्रिंटर से हम कई सारे कंप्यूटर अगर नेटवर्क में कनेक्टेड है तो सारे कंप्यूटर एक प्रिंटर से अपना आउटपुट निकाल सकते हैं. फिगर 1.1 एक अच्छा एग्जांपल है इसको शो करने का. क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंगल प्रिंटर कंप्यूटर है जो कि स्टोरेज डिवाइस से कनेक्टेड है या फिर सर्वर से कनेक्टेड है, और उस सर्वर से अलग अलग क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्टेड है. अब क्लाइंट और सर्वर क्या है ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे.
A computer network in a office, company or in computer lab connected many computers and other devices such as printer with each other using cables. Means हमारे कंप्यूटर लैब में या किसी कंपनी में या ऑफिस में जो कंप्यूटर्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, केबल्स की फॉर्म में भी कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर वाईफाई मीन्स वायरलेस फिडेलिटी वायरलेस भी कनेक्टेड हो सकते हैं. Do you know? Internet is a worldwide connection of networks which allows subscribers to send and receive emails, chats, or browse the World Wide Web or www to get information on different topics. Means इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, वर्ल्ड में जितने भी कनेक्शंस हैं उन सब का एक इंटरलिंक है. मीन्स एक उन सबको मिला के इंटरनेट बनता है, जिसके अंदर जो सब्सक्राइबर है जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो किसी भी मेल को सेंड या रिसीव कर सकता है, चैट कर सकता है, ब्राउज कर सकता है वर्ल्ड वाइड वेब पे इंफॉर्मेशन के लिए या फिर डाटा के लिए. Now let us see the components of computer network. A computer network consists of following four basic components: sending device, receiving device, communication devices, and transmission medium. In figure 1.2, we can easily understand the components of a computer. Here, this is a sending device or a sender. This is a modem or communication device. Modem means modulation and demodulation. And this modem is connected to the other modem located at different location and is connected through wire, which is a transmission medium. Transmission medium is means the medium through which signals travel from one device to another device. And the last one is receiving computer or receiver. Sending device, a device which is used to send messages, data or information to other device connected to a network is called a sending device. In a computer network, a sending device is usually a computer. Means वो डिवाइस सेंडिंग डिवाइस वो डिवाइस होते हैं कि जो मैसेज, डाटा या इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं किसी दूसरे डिवाइस को जो कि उस नेटवर्क में कनेक्टेड है. और जनरली जो सेंडिंग डिवाइस है वो कंप्यूटर्स ही होते हैं. नेक्स्ट, रिसीविंग डिवाइस. इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडिंग डिवाइस. द रिसीविंग डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अ स्टोरेज डिवाइस. मीन्स रिसीविंग डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कि डाटा, मैसेज और इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं सेंड बाय द सेंडिंग डिवाइस. एक कंप्यूटर नेटवर्क में रिसीविंग डिवाइस कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई प्रिंटर भी हो सकता है या फिर कोई स्टोरेज यूनिट भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो वो आप प्रिंट करने के लिए नेटवर्क में आपके एक प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप प्रिंट की कमांड दोगे तो जो सेंडर है वो एक कंप्यूटर है जो कि प्रिंट की कमांड देता है और रिसीवर हुआ प्रिंटर. तो इस फॉर्म में आउटपुट क्या हुआ? प्रिंटर. हमें कोई फाइल स्टोर करनी है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में तो इस केस में रिसीवर क्या हुआ? स्टोरेज डिवाइस. नेक्स्ट, communication devices. Communication devices are used for communication between computer and other devices. Modem is a popular communication device which is used for internet communication. Means वो डिवाइस जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइस. और मॉडम इनका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है. ट्रांसमिशन मीडिया. Transmission media is a channel or a path through which the data or information is transferred from one place to another in a computer. Networks are connected by wired or wireless transmission medium. ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? एक पाथ या चैनल जिसके थ्रू डाटा और इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह. अब ये वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घर में उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो वायर की फॉर्म में ट्रैवल होते हैं. और वैसे ही अगर हम देखें जो इंटरनेट है, हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है तो हम वाईफाई से हमारा जो डिवाइस है वो वायर के थ्रू ईथरनेट भी कनेक्ट हो सकता है
या फिर वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है थ्रू वायरलेस फिडेलिटी या वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो इस केस में क्या केबल्स क्या हुई, ट्रांसमिशन मीडिया। और नेक्स्ट इज सर्वर एंड क्लाइंट्स। In a computer network, different computers perform different tasks or role. According to these tasks and role, computer can be categorized as either client or server. Means एक कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर और अलग अलग डिवाइस अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं और उनके जो टास्क परफॉर्म करते हैं उनके हिसाब से उनको क्लाइंट और सर्वर में कैटेगराइज किया जाता है। In figure 1.3 shows the network containing server and client. इस फिगर में जो सेंट्रल सीपीयू है जो वो सर्वर का काम कर रहा है उससे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट कनेक्टेड है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर दी सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। सर्वर is a powerful computer that facilitates the whole network by providing variety of services to the computer or device connected to network. Means सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि पूरे नेटवर्क को फैसिलिटेट करता है, पूरे नेटवर्क को सर्विस प्रोवाइड करता है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है या कोई सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑल द डिवाइसेस और कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ये दीज सर्विसेज में इंक्लूड प्रोसेसिंग डाटा, यूजर ऑथेंटिकेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग network traffic. Client. Client is a less powerful computer as compared to server computer. It relies on servers for resources such as files, devices and even processing power. Means क्लाइंट सर्वर से कम पावरफुल डिवाइस है जो कि सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है अपने रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि फाइल्स सर्वर से लेगा, डिवाइसेस लाइक प्रिंटर और even the power. Types of computer network. On the basis of geographical distance, computer networks are categorized into the following three categories: LAN, local area network; MAN, metropolitan area network; WAN, wide area network. Now let us see them in more detail. First one is LAN, local area network. A local area network is a network that is confined to a relatively smaller area. It is generally limited to a geographical area such as building or adjacent building. LAN is most common type of network. LAN area network are usually owned by one organization. मीन्स लैन एक वो उस टाइप का नेटवर्क है जिसके अंदर हमारा जो एरिया कवर्ड होता है इस नेटवर्क में वो बहुत कम होता है। वो एक रूम हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है या फिर एडजेसेंट साथ साथ दो बिल्डिंग हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ लैन कैन बी योर वाईफाई अवेलेबल एट योर होम और नेटवर्क इन अ स्कूल बिल्डिंग. These can be an example of LAN. Figure 1.4 shows a LAN. In this figure, here this is the transmission medium. Means transmission medium is the line or the path or channel through which signals are being transferred. This is a server. This is a file server, means storage server. This is a printing server. Here this is a switch or the modem through which different client computers are connected. This is a example of LAN. लैन में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके घर का वाईफाई है, वाईफाई से आपके अलग अलग मोबाइल, आपके टेलीविज़न, आपके लैपटॉप और पीसी ये कनेक्टेड होते हैं आपके वाईफाई से। अब वाईफाई की रेंज कितनी होती है, या तो आपके घर तक होती है या फिर साथ वाले घर तक या आपकी बिल्डिंग तक ही होती है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे वाईफाई के राउटर से अपना डिवाइस का, तो जो नेटवर्क है उसकी कनेक्टिविटी स्लो हो जाएगी और अल्टीमेटली कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। Next, advantages and disadvantages of LAN. Advantages: computer can share
peripheral devices like printer, storage devices, scanning devices, CD-ROM etc. मीन्स लैन में हम एक प्रिंटर भी कनेक्टेड है तो वो डिफरेंट कंप्यूटर से आउटपुट निकाल सकता है. यूज़र कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन अ नेटवर्क सर्वर. मीन्स नेटवर्क सर्वर पे हम अपना डाटा सेंट्रली सेव कर सकते हैं क्योंकि वो छोटे एरिया पे है और डाटा इजीली एक्सेसिबल होता है. यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफर डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स वेरी इजीली. Application package such as word processor, spreadsheet, etc. in a server computer can be shared by all users. Means जो हमने एप्लीकेशन पैकेजेस खरीद रखे हैं वो हम अगर एक सर्वर कंप्यूटर ने खरीद रखे हैं तो हम सारे क्लाइंट डिवाइसेस को वो शेयर कर सकते हैं और वो डिवाइसेस भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी इजीली होती है. क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन. Special security measures are needed to stop unauthorized user. मीन्स स्पेशल ऑथेंटिकेशन. आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो उसके वाईफाई का भी कुछ पासवर्ड होगा. अगर उसी पासवर्ड को डाल के ही आप कनेक्ट कर सकते हो. ये सिक्योरिटी मेजर है ताकि कोई अनऑथोराइज पर्सन कोई इलीगल एक्टिविटी आपके साथ आपके डिवाइस के साथ परफॉर्म ना हो सके. लैन नीडेड टू मेंटेन बाय स्किल्ड पर्सनल. Means skilled personals are required to do the maintenance of local area network. Next, metropolitan area network or MAN. A large computer network which extends to a city or to a metropolitan region in terms of is termed as metropolitan area network or MAN. MAN connects two or more LANs to form a network spread over a whole city. Metropolitan means a city or a metro city. मीन्स मैन एक वो टाइप का नेटवर्क है जो कि एक सिटी को और एक पर्टिकुलर रीजन को कवर कर सकता है. मीन्स ग्रुप ऑफ लैंड्स, टू और मोर लैंड्स कनेक्टेड टुगेदर कैन फॉर्म अ मैन, जो कि एक होल सिटी के ऊपर फैला हुआ हो सकता है. केबल टेलीविजन नेटवर्क इन अ सिटी इज़ अ गुड एग्जांपल फॉर मैन. मीन्स जो आपका केबल टेलीविजन है, जो आपका केबल प्रोवाइडर है, उसके वो अपने एक कनेक्शन से एक सर्वर से कई आपके रीजन और सोसाइटी में सारे जो घरों है उनको केबल प्रोवाइड करता है. ये एक अच्छा एग्जांपल है मैन का. Figure 1.5 shows a metropolitan area network connected sub offices and home users to the head offices. Here you can easily understand what is MAN. Here towers are present at different location in a city and each tower is connected to each other through wireless signals or through cables, and these towers provide internet or any other facilities to each of the individual sub office or offices or houses. Now let us see the advantages of MAN. It is bigger than LAN. It transfer data at high speed. Means area covered by MAN is larger as compared to LAN and data transfer speed is high. Disadvantages are it is expensive and difficult to maintain. Now WAN or wide area network. Wide area network is a very large computer network covering a large geographical area such as a state, province, country or the whole world. WANs often connect multiple smaller networks. Many large organizations develop their own private WANs. An example of WAN is internet. Means WAN क्या है? WAN wide means बहुत ज़्यादा एरिया, बहुत बड़े एरिया को जब कवर कर लिया जाता है एक साथ एक ही नेटवर्क के अंदर, जैसे कि एक स्टेट को, एक कंट्री को या फिर पूरे वर्ल्ड को अगर एक कनेक्शन में एक कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया जाता है, नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो नेटवर्क कौन सा होता है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. और वाइड एरिया नेटवर्क में मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं. मीन्स एक सिंगल वाइड एरिया नेटवर्क में जिस तरह इंटरनेट है, इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन. इंटरनेट इज़ अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स in which there are several different networks connected, and through these several different networks different devices are connected. Figure 1.6 shows a WAN. Here in this figure there is this is a server computer which transfers its signals to a satellite, and then the satellites transfer these signals to a different server computer available at other location.
These server computers can also be connected through modems to different server computers. Means data can be transferred from one location to another location via satellite medium or any other medium of communication. Now advantages of WAN. In WAN, the user at different location can connect to a central server. मीन्स जो यूज़र है मान लो कहीं दूसरे लोकेशन पे, मीन्स अमेरिका में एक पर्सन बैठा है, तो वो इंडिया के सर्वर पे भी कनेक्ट कर सकता है. क्यों? क्योंकि वैन है, अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल VPN. इट इज़ यूज्ड इन मॉनिटर डिस्टेंस लोकेशन एंड ऑफिसेस. मीन्स एक कंपनी है जिसके ऑफिस जो है अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल है, तो वो कंपनी एक वैन नेटवर्क के थ्रू अपने सारे ऑफिस को मॉनिटर कर सकती है. डिसएडवांटेजेस. वैन इन वैन सिक्योरिटी इज बिग इशू. मीन्स लोकेशन दूर दूर होने की वजह से हमारे पास डाटा थोड़ी लेट ट्रांसफ़र होता है और उसको मैनिपुलेट भी करना बहुत आसान होता है. फॉर एग्जांपल हैकिंग, इंटरनेट हैकिंग, वो illegal hacking. Setting up a network can be expensive and complicated task. As we know, WAN covers a large area, so setting up these server is very expensive, as they also require a satellite for transmission. Management, maintenance and troubleshooting WAN is also a difficult task. Now let us see the communication devices. Most commonly used communication devices are dial-up modem and network interface card or NIC. कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपको क्या समझ आ रहा है नाम से? कम्युनिकेशन डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जो कि कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं एक कंप्यूटर या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जो कि एक नेटवर्क में कनेक्टेड है. मीन्स आप किसी को कॉल करते हो तो आपके और उस पर्सन के बीच में एक नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है, और कम्युनिकेशन डिवाइस क्या हुआ? आपका मोबाइल फोन. डायल अप मॉडम और डायल अप मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. is a communication device which is used to connect the internet, exchange information and to send and receive data from one computer to another computer. It translates computer information into a form that can be transmitted over telephone lines. Figure 1 shows the working of modem. Here, let us understand this figure in more detail. Here, this is a computer 1 and this is computer 2. This is modem 1 and this is modem 2. Here, the data computer, as you all know, computers process the data in the form of digital signals and telephone lines transmit only analog signals. Then the work of modem comes. Modem converts digital signals to analog signals so that it can be traveled from one place to another, and then the modem available at that place converts this analog signal to digital signal so that the computer too can process it easily. And the conversion of digital to analog is called as modulation, and conversion of analog to digital is called demodulation. I repeat, ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, ये मॉडम 1 है, मॉडम 2 है. हमें डाटा को कंप्यूटर 1 से 2 पे ट्रांसफ़र करना है. तो इसके अंदर क्या होएगा? कंप्यूटर तो सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ही रिसीव करता है, डिजिटल सिग्नल्स को ही प्रोसेस करता है. यहाँ पे मॉडम का काम आता है. मॉडम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. अब ये एनालॉग सिग्नल्स टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रैवल करते हैं. टेलीफोन लाइंस क्या हो यहाँ पे? ट्रांसमिशन मीडियम. होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स मूव फर्दर. A modem can be located inside or outside the computer. Means modem इनबिल्ट भी होता है आपके PC या लैपटॉप में, और हम अलग से कनेक्ट कर सकते हैं. अलग से कनेक्ट करने का एग्जांपल जो आपके राउटर होते हैं घर पे, जो राउटर लगे होते हैं वाईफाई के, वो एक एक्सटर्नल मॉडम है. इन कंप्यूटर्स
information is stored digitally, whereas information transmitted over telephone line in the form of analog signal. Modem converts digital signal to analog, means modulation, and then analog signal to digital signal, demodulation. This I have explained it to you in this diagram very clearly. Next, Network Interface Card or NIC. Network Interface Card is an expansion card that enables a computer to connect to a network. Each NIC has a unique serial number. This number is used to identify the computer on a network. Means NIC का काम क्या होता है? NIC एक एक्सपेंशन कार्ड है जो कि हर एक डिवाइस को एक एड्रेस प्रोवाइड करता है। जो एक नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइस होता है उसका एक एड्रेस होता है। क्यों? क्योंकि हर NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक सीरियल नंबर होता है। वो सीरियल नंबर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस है जो कि एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। A network interface card must be installed in each computer on a network. Figure 1.9 shows a network interface card. Means network interface card must है अगर आपको एक कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना है। विदाउट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका जो डिवाइस है वो नेटवर्क से कनेक्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका कोई सीरियल नंबर नहीं है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, हम पता नहीं लगा सकते कि वो कौन सा डिवाइस से कनेक्टेड है। Next, types of physical transmission media. The means through which data is transferred from one place to another is called transmission or communication media. There are three common types of physical transmission media or guided media. Transmission means travel, media means source. Physical means which are appeared. Means the mean through which data is transferred from one place to another is called transmission or communication medium. मतलब जिस मीडियम से डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर ले इजीली, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम. और देयर आर कॉमनली थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम. नंबर 1 ट्विस्टेड पेयर केबल, नंबर 2 कोएक्सियल केबल, नंबर 3 फाइबर ऑप्टिक केबल. Do you know there are two types of transmission media? Guided media is a transmission media in which data or signals is guided by cables or wires. Unguided medium or wireless medium does not use any physical connectors between the two devices communication. Means ट्रांसमिशन मीडियम जो दो टाइप के होते हैं, एक वायर्ड और दूसरा वायरलेस. वायर को हम गाइडेड भी कहते हैं और वायरलेस को अनगाइडेड कहते हैं. गाइडेड में क्या होता है? एक जो सिग्नल्स है फिजिकल कनेक्टर जैसे कि वायर से ट्रैवल करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में एक नेटवर्क में. बट अनगाइडेड में क्या होता है? वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसके अंदर कोई भी फिजिकल कनेक्टर्स रिक्वायर्ड नहीं होते दो डिवाइस को एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन के लिए. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम इन मोर डिटेल. फर्स्ट, ट्विस्टेड पेयर केबल. Twisted pair cables are the most popular transmission media for transferring data on a computer network. They are especially used in LAN. Twisted pair wires consist of two strands of copper twisted together. Twisted means मोड़ा हुआ, as the name suggests. ट्विस्टेड केबल क्या होती है? मोस्ट पॉपुलर ट्रांसमिशन मीडिया है किसके लिए? लैन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ट्विस्टेड पेयर केबल. इसके अंदर क्या होता है? दो कॉपर के स्टैंड्स को आपस में मोड़ा जाता है, आपस में ट्विस्ट किया जाता है एक सिंगल वायर बनाने के लिए, केबल बनाने के लिए. द ट्विस्ट अलाउ द डिजिटल सिग्नल टू ट्रेवल मोर एज कम्पेयर टू अ रेगुलर कॉपर वायर. मीन्स जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा उतना ही ज़्यादा सिग्नल ईजिली ट्रेवल करेगा. The more the twist per centimeter, the further the signal can travel. मीन्स जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा उतना दूर सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है. ट्विस्टेड केबल के दो टाइप होते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल UTP एंड शील्डेड ट्विस्टेड केबल STP. UTP if wires are unshielded,
They are called unshielded twisted cables. Figure 1.10a. Here, these are unshielded, these are shielded. Unshielded means they have they do not have any extra covering, but in shielded this is the extra covering which is available. Shield means external protection. This protection can protect them from either weather condition or any cuts, and also protects the network leakage or data leakage. Now let us see the characteristics of twisted pair cable. It is least expensive type of cable and it is easy to install. Means twisted cables are cheaper and are easy to install. Next, coaxial cables. A type of wire that consists of center wire surrounded by insulation and a shield of braided wire. The shield minimizes electrical and radio frequency interference. मीन्स कोएक्सियल क्या होता है, कोएक्सियल में एक सेंट्रल वायर होती है जो कि इंसुलेशन की लेयर से कनेक्टेड होती है, और एक शील्ड भी होती है ताकि इलेक्ट्रिकल और रेडियो फ्रीक्वेंसी से उसको कोई फ़र्क ना पड़े. जो एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है वो अंदर के सिग्नल्स को अफेक्ट ना करे. कोएक्सियल केबल इज़ अ प्राइमरी टाइप ऑफ केबल यूज्ड बाय cable television industry and is also widely used for computer networks. Plastic jacket, insulator and braided shield in a coaxial cable ensures data transmission without interference from other cables. Coaxial cables are shown in figure 1.11. These are the coaxial cables. Here these cables are protected by, this is the insulating layer, this is the shield, and this is the cable. Here insulator, plastic jacket and metallic shield. These three protects the center core from any external radio frequency or any external disturbance. And these type of cables are basically used in cable industry, television cable industries. Next, the characteristics of coaxial cables. It is more expensive than standard telephone wire. Means these are expensive than other types of wire. It is much at risk of interference with twisted pair cable. मीन्स इसके अंदर इंटरफेरेंस मीन्स इसके अंदर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस कम होती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड केबल. मीन्स ट्विस्टेड केबल के अंदर डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोएक्सियल. द डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ हायर देन ट्विस्टेड पेयर केबल. डाटा जो है जल्दी ट्रांसफ़र होता है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल एंड आर ईजी टू इंस्टॉल्ड. लास्ट वन, फाइबर ऑप्टिक केबल. Fiber optic is a type of cable that uses glass or plastic threads to transmit data. Means in this type of cable, glass or plastic threads are used for transferring data from one place to another. It consists of bundles of glass thread, each of which is capable of transmitting messages in the form of light wave. Means in fiber optic cables, data is transferred in light waves. Fiber optic cable consists of center glass core surrounded by several layers of protective material such as cladding and buffer coating as shown in figure 1.12. Means in this type of cable an external insulation is provided over a center core glass and the data is transferred in the form of light waves. As the name suggests, optics. Optics means related to light. Now let us see the characteristics of fiber optic cable. It is more expensive as compared to other cable. Means these cables are expensive as there is a requirement of light waves and difficult to install. The data transfer of rate of fiber optic cable is the highest. Means
data is transfer at a very high speed as compared to the other two. So thank you so much for watching, and please do not forget to like, share and subscribe to our channel.